Johnson's driving gotten better? Those traffic tickets are still piling up. Hai, para benda like subscribe हो तो भाई। As fleeting as a snowflake's breath, has time. I am the moonlight that breaks through the darkness.
seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! As twilight falls, the new moon draws near. The way of the hunter. Modern, respectful, and sincere. Trespassers will not be tolerated. First blood! For Adria, our last homeland. Watch your back. Stable network. Ally has been slain. Enemy double kill. An enemy has been slain. My arrow is my answer. I'm ready to re-enter the battle. Clear up lanes. You can't run from my arrow. Slain the turtle. My aim is true. Killing spree. For Adria, our last homeland. Ally has been slain. Trespassers will not be tolerated. Initiate retreat. Until the new moon graces us again, my fight carries on. Launch attack. The forest is on my watch when the moon shrouds darkness. Initiate retreat. The moon impartially sheds her grace on every fade into the moonlight. Initiate retreat. Enemy grounded. Eclipse. Has been slain. I'm ready to re-enter the battle. Launch attack. The way of the arrow. Swift, The silent, enemy has and slain precise. the turtle. Shut down. Touch control. You have slain an enemy. Herb damage. Launch attack.
The moonlight spares no mercy to the foes of Aaj Hoga. Initiate retreat! Initiate retreat! Initiate retreat! Forever shine upon us. Initiate retreat! Our turret is under attack! Initiate retreat! Our turret has been destroyed. The way of the Our arrow. turret is under Swift, attack. silent, and precise. Launch attack! My arrow is my answer. Superb control. Superb AoE. An enemy has been slain. Superb AoE. An enemy has been slain. Double kill. Attack the turtles. The way of the hunter. Modern, respectful, and sincere. Launch attack! An ally has slain the turtle. Launch attack! You can't run from my arrow. Fade into the moonlight. Killing spree. Double kill. Killing spree. Your team destroyed a turret. Until the new moon graces us again, my fight carries on. Your team destroyed a turret. Keep an eye on the map. The moonlight spares me. The moon forever shine upon us. Mega kill. Perfect shot! Double kill. Initiate retreat. Unstoppable. Watch your back. Launch attack. Shut down. Initiate. Our turret is under attack. My aim is true. Elves won't give in. Launch attack. Eclipse. Launch attack. Initiate retreat. Superb control. I'm ready to re-enter the battle. Unstoppable. Launch attack. Double kill. The forest might burn. The moon may be dark. But our hope outlives everything.
Flexible, reserved, and understated. Initiate retreat. Ally has been slain. Slain. Ally has been slain. Shut down. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our fight carries on. Our turret has been destroyed. The moon partially sheds her grace on every corner you paint. Enemy has slain Lord. Our inhibitor turret is under attack. The forest is on my watch when the moon is shrouded in darkness. Our inhibitor turret is under attack. Thank you to the moonlight. Why? Destroy the turret. Initiate retreat. Attack enemy lord. Under attack. Superb tanking. Our turret has been destroyed. Elves won't give in, no matter how much more suffering we'll go through. The moon is no foes as we Keep an eye on the map. Our turret is under attack. The way of the owl, swift, silent, and precise. Enemy has been slain. Superb control. Superb control. Triple kill. Our base is under attack. The forest might burn, the moon may be dark, but our hope outlives Launch everything. attack. Launch attack. Initiate retreat. The way of the bow, flexible, Initiate reserved, retreat. and understated. Shut down. Ally has been slain. Initiate retreat. Team destroy the turret. Request backup. Trespassers will not be tolerated. Initiate retreat. Initiate retreat. The way of the hunter, moderate, respectful, and discreet. Initiate retreat. Tanking. Enemy has been slain. Destroy the turret. Request backup.
to re-enter the battle. Ally has been slain. Superb control. Superb AoE. Initiate retreat. Turret is under attack. Our turret has been destroyed. एक और रुपया नहीं, रियाक का नहीं, रियाक को ले दिया दिया The great spire of knowledge illuminates us all. Take a break if you get tired. I'll take care of things here. Calling all chess masters. An exclusive. He might get taken down instantly, and certainly World Phobius will shut him down. Thank you so much people for your patience out here. एक छोटा सा टेक इशू था जिसको बहुत ही जल्दी हमारी टीम ने फिक्स कर लिया है, and now we'll be hopping back into the game. And man,
Imagine the stakes being so very high that even the game says I need a pause for a second. Certainly, man. Oof, this game, bhai, ये matchup ही ऐसा है. When we talk about the El Clasico, that's what you want, that's what you get right now. And SCTUL, IQ SCTUL, it got like the back in the game, by the way. We talk about the most important thing is that goal lead. They're still maintaining that 2K goal lead. We talk about the turret still intact. सिर्फ एक exchange जरूर हुआ है and you could respect it, but other than that both the teams are looking solid. But problem ये है कि Godlike का center lane का turret है, it will create chaos once you lose out your lord, because we all know Radium's map control and his presence of mind is bonkers, man. That I agree. और अब इन सब चीजों के पीछे अगर आप नोटिस भी करें, right? I mean, IQSATUL has constantly gone in for those invades. वो Van को उनका fun time दे ही नहीं रहे हैं जंगल में. But even after that, he has been farming up. Still level 12. Apex wants to go back again into the fight now with the street called in as well. Romcom bursted in a second as Anti soaks up every last bit of damage, and Art cannot do the same. Not the artist anymore right now. It might as well be Bob, though eventually taken down by just the zoning and the turret damage. Van और Fate इकलौते दो बंदे survive करते हुए, but the Lord will go for SATUL. And आपकी center lane का inhibitor, I think so, the shield, it's done, it has been destroyed. Would love to see that, but Yes, now it is Team done. SATUL, they are going for the Lord, and as you just mentioned, I completely agree with your factor, your statement, and yes, it has been destroyed. No way, this is looking very, very bad for the players of Team Godlike. It's got a bounty on his head. Van Radium, someone just stop this guy. बहुत ज़्यादा अच्छा control, and Apex, that tsunami slam was just completely out of the blue. Exactly. Literally वो purple buff वाले bush की तरफ से ही आए हैं. Went in with the Tidal Strike, went in with the Tsunami Slam. Romcom, I don't think so. This is the right place for you to be. Yeah, there we go. Might want to pick him again though. Purify bait कराने की पूरी कोशिश, but Romcom ने वो use नहीं किया, and Apex did not really commit it for the Tsunami Slam either. But guess what? He's not going to shy away this time as Fate busted down in a second though. They still hold the Lord push down, पर वो Minions का push वो दिक्कत देगा क्योंकि mid से एक बड़ी chunky wave आ रही है. Yeah, it is. और आपको simultaneously वो lane भी control करनी है, and he diving in, trying to bait out the players, and yes, eventually he will be able to destroy these inhibited. Will do that. That's the really interesting time in, but he got to respect it. The begin wave has been cleared by the players of Team Godlike, but chill out. A-okay as of now, which you said. And on the back of it, अब दोनों ही टीम बिल्कुल बैक ऑफ करती हुई, रिस्पेक्ट करती हुई. I know, right? It is tough to come back from, but एक win condition अभी भी है Godlike के पास, and that is Fate. 2 free and 3, yes. Are looking solid, but problem ये है कि Godlike का center lane का turret है, it will create chaos once you lose out your lord, because we all know Radium's map control and his presence of mind is bonkers, man. That I agree. और अब इन सब चीजों के पीछे अगर आप नोटिस भी करें, right? I mean, IQSATUL has constantly gone in for those invades. वो Van को उनका fun time दे ही नहीं रहे हैं जंगल में. But even after that, he has been farming up. Still level 12. Apex wants to go back again into the fight now with the street called in as well. Romcom bursted in a second as Anti soaks up every last bit of damage, and Art cannot do the same. Not the artist anymore right now. It might as well be Bob, though eventually taken down by just the zoning and the turret damage. Van और Fate इकलौते दो बंदे survive करते हुए, but the Lord will go for SATUL. And आपकी center lane का inhibitor, I think so, the shield, it's done, it has been destroyed. Would love to see that, but Yes, now it is Team done. SATUL, they are going for the Lord, and as you just mentioned, I completely agree with your factor, your statement, and yes, it has been destroyed. No way, this is looking very, very bad for the players of Team Godlike.
Phoenix got a bounty on his head. Van Radium Summit just stop this guy. बहुत ज़्यादा अच्छा control in Apex. That tsunami slam was just completely out of the blue. Exactly. Literally वो purple buff वाली push की तरफ से ही आए हैं. Went in with the Tidal Strike, went in with the Tsunami Slam. Romcom, I don't think so. This is the right place for you to be. And there we go. Might want to pick him again though. Purify bait कराने की पूरी कोशिश, but Romcom ने वो use नहीं किया. And Apex did not really commit it for the Tsunami Slam either. But guess what? He's not going to shy away this time. And bait busted down in a second though. They still hold the Lord push down, पर वो minions का push वो दिक्कत देगा क्योंकि mid से एक बड़ी chunky wave आ रही है. Yeah, it is. और आपको simultaneously वो lane भी control करनी है and e-diving in, trying to bait out the players, and yes, eventually you will be able to destroy these inhibited. Will do that. That's the minion just to chime in, but he will respect it. The minion wave has been cleared by the players of Team Godlike, but chill out. A-OK as of now, which you said. And on the back of it, अब दोनों ही टीम बिल्कुल बैक ऑफ करती हुई, रिस्पेक्ट करती हुई. I know, right? It is tough to come back from, but एक win condition अभी भी है Godlike के पास, and that is fate. 2 free and 3, yes. Not just the slot on the stake, it is also this massive prize pool of the first placing team. We've got the major chunk of it in the form of 45 lakhs for all the teams. तो अगर आप top 8 में आए थे, अगर आप open qualifiers की जर्नी से आगे आए थे, तो at least 1,36,500 रुपए तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे. पर सब लोगों की आंखें उस 16,38,000 पे होंगी शिवांश. But just imagine 16 lakh as well as you'll go international, you'll go for the EWC. This is humongous. Yes. Now we got the top 3, so minimum 5,40,000 रुपए आप लेके जा रहे हो. Once again, man, this is gonna be the best time for all these players, for all these lads and all these teams especially, man. Yes. Because once again, अब हमारे पास वो 3 टीमें हैं. कौन सी रहने वाली है? True Rippers, ladies and gentlemen. The number 1 seeded team is the number 1 team who reached in the grand finals. अब वो इंतजार कर रहे हैं. Which team will be there? Is it going to be S8UL and Team Godlike, the El Clasico of MLMS? And I'll say it's a battle between Baxia versus Yujong. देखना पड़ेगा कौन उस ड्रैगन की ब्लेसिंग्स लेके आगे बढ़ेगा आज, क्योंकि देवी और सज्जनों सबसे पहला गेम होगा S8QL और Godlike के बीच में. जैसे आपने बोला है Phoenix, it is going to be the El Clasico of the MOBA Legends 5v5 in the Indian subcontinent. वो एक बारी मैच खत्म होता है, then उसके बाद we have got the show match as well between the Lords and the Turtles, ladies and gentlemen, and then we will prepare for that grand finals जो कि शुरू होगा आज 3 बजे. एंड ये सारा एक्शन आप कहाँ देखेंगे? एट द जियो कन्वेंशन सेंटर. तो अगर कोई भी मेरा दोस्त है जो स्ट्रीम को अभी देख रहा है ऑन एनी प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू आर एनीवेयर अराउंड द जियो कन्वेंशन सेंटर, फटाफट से जाइए, कॉमिक कॉन की टिकट लीजिए एंड LAN action को enjoy करिए, because you do not want to miss out this extravaganza that's been happening out there. And also ये एक ऐसा पूरा मौका बन जाता है Phoenix that there is no looking back. अभी तक जितने हिकअप्स हुए, जितनी बार स्टंबल हुए आप, all of that is going to be kept aside. Now you have to only look towards one way, and that is forward. And that's it. That's going to be the end, right? अब आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत selfish भी होना है that yes, I have to perform well. और थोड़ा बहुत teams के बारे में भी सोचना है. But the main factor is that you have to be confident that you will represent our nation, our country in the international stage. That is the main thing. Yes, आपकी rivalries है. Yes, बहुत सारा already cooking हुई है in terms of team. बहुत सारे transfers. Now we got one of the stack lineup. We got some games to the land demons. Everything. ये सब कुछ at the end
matter सिर्फ इस international stage पर ही करेगा. So you got to show us the best game. If we talk about the best, True Rippers is right now the best because yesterday the way they defeated IQ RNGX was a queen sweep, by the way. It was a surprise for us. लेकिन to be honest, ये जो आज का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, it will be full of surprises. Because ये टीम जहाँ पर कोच नहीं है, वहीं दूसरी side the hunger in Apex eyes, you can clearly see that through that camera. और वही चीज देखने के लिए एक बारी हम चलेंगे स्टेज की तरफ भी देवी और सजनों because crowd is waiting for us and man tell me how the teams are feeling. टीम्स के चेहरे देख के तो लग रहा है कि दे आर स्टिल ओके डूइंग दैट बिकॉज आपको भी पता है बड़े मैच से पहले एक्साइटमेंट होती है, नर्वस होती है. बट गाइस दिस इज डे 2 ऑफ MLS लैंड फिनाले. आज के दिन हमें एक टीम जरूर मिल जाएगी जो MSC स्टेज पे खेलने वाली है, EWC 2026 रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन इंडिया. But what a day one it was. हमने शुरुआत करी थी 6 टीम्स के साथ. We lost 3 in the process. आज 3 बची हैं. इन 3 में से एक टीम ऑलरेडी वेट करी फॉर द ग्रैंड फाइनल्स और इस मैचअप के अंदर हमें दूसरी ग्रैंड फाइनल्स टीम मिल जाएगी. अब दोनों लाइनअप को बुला लेते हैं. Make some noise for team Godlike Esports and IQ SAQL. बोर्ड चैंपियंस, इनके ऑनलाइन रन मजेदार थे. एक तरफ हमारी SAQL है. इनिशियल फेजेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बट नो दे मेड अ कमबैक. बट गॉडलाइक की बात करते हैं. गॉडलाइक की स्टार्टिंग कमजोर थी बट कमबैक तो उन्होंने भी किया है. दोनों का गेम चालू करेंगे एक बार. आई वुड रिक्वेस्ट आइजल साहब, एपेक्स यहाँ पे 8 और मालिक एपेक्स, बिकॉज आप दोनों के बिना इस मैचअप की शुरुआत तो नहीं हो सकती. एक बार हाथ मिला लीजिए. नजरें मिलाती नहीं क्या आप? तो किससे शुरुआत करें? फेवरेट अच्छे करते बिकॉज दे वर द टॉपर्स. सर ऑन पेपर देखा जाए तो SAQL के जो स्टैट्स हैं वो बेटर है बट लैंड पर चीज़ें बदल जाती हैं. इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये रहा आपका माइक. मैं चाहता हूँ कि बस एंजॉय करें इस मोमेंट. ज़रूर लैंड पे चीज़ें बदल जाती है. लास्ट टाइम हमने देखा था ज्ञान गेमिंग के अंदर एंड रिसेंटली उसके बाद ऑनलाइन फेज में भी हमने देखा था जहाँ पे गॉडलाइक 18-0 हुआ था. तो ऑफकोर्स चीज़ें तो बदलती है एंड उनकी जर्नी के लिए तो काफ़ी उनकी रोलर कोस्टर जर्नी हुई है फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल टू गेटिंग बैडली क्वालिफाइड टू प्ले ऑफ. तो मैं चाहूँगा कि वो लोग अच्छा टफ दे बैटल, लास्ट टाइम की तरह ना हो 18-0 टाइप. तो बेस्ट ऑफ लक टू देम. बट आज प्रॉब्लम इज जो गॉडलाइक हमने ऑनलाइन देखी थी और जो गॉडलाइक हमने कल देखी है, जमीन आसमान का फर्क है भाई. कल जो CRQ के साथ आपने किया है उनको रात को नींद नहीं आई. अब इस परफॉर्मेंस, इस मोमेंटम वाली गॉडलाइक के आज का मैचअप कितना आसान होगा, क्या होगा बताइए. कल हमारा पहला स्टेटमेंट था एंड आज शायद एपिक्स को ना नींद आए रात में. बट आई थिंक आर्ट इज समबडी, हमेशा कम बोलते हैं बट गेम से ज़्यादा खेलते हैं. मैं चाहूँगा एक फाइनल हैंडशेक और अपने वर्क स्टेशन में चले जाइए. तरीके से तो देखा जाए ये जो मैच है वो ग्रैंड फाइनल वाली इंटेंसिटी वाला है बट यहाँ से हमें हमारी दूसरी ग्रैंड फाइनल्स मिलेगी जो ट्रू रिपर्स को सामना करने वाली है. सुधीर कास्टर पे चलते हैं, वहीं से लैंड ऑफ डॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे. Oh, trust me man, I am so prepared to move to the land of dawn right now क्योंकि yes, ये एक ऐसी rivalry है जो कि बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है. We have seen Godlike win on certain events, but we are now going to focus on what happens in the most important one. Now the important factor is, league stage के अंदर भी हमने एक ऐसा ही similar battle देखा था इन दोनों टीमों का. Team Godlike versus SAQL and we know उस दिन क्या हुआ था. SAQL was looking strong, in fact very strong. बहुत ज़्यादा आसानी से उन्होंने उस टीम को अपने लिए जीता जरूर था बट once again आज का दिन कुछ अलग है. It's just land.
गॉडलाइक को पता है कि भाई लैन में खेलना ही कैसा है. Let's take a look at the roster. Why we're talking about this particular team? Because once again, man, a solid team. Van, Art, Rom-Com, Pete, बहुत ज़्यादा मजा आता है the way this whole team plays, man. And Art, उनके चेहरे पे ना मुस्कान आती है. ड्राफ्ट फेज में मुझे आर्ट को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. Because कभी-कभार ऐसा लगता है कि he knows. उन्हें पता है कि भाई मैं अपनी ऑपोजिशन टीम को कैसे मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ ताकि वो ड्राफ्ट हमें दे दे. रात भर बैठ के जो इंसान ड्राफ्ट बनाए अपनी टीम का तो उसकी शक्ल पे एक स्माइल तो आती ही है. बट अगर रात में बैठ के ड्राफ्ट बनाने की बात है तो एक इकलौती डायरी रहती है इस एक इंसान के पास जिसको खोल के ये एक ऐसा ड्राफ्ट निकाल के लाता है जो कि हमेशा इनकी टीम को जीत दिलवाता है. और मैं बात कर रहा हूँ एपेक्स की. बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट द डायरी ऑफ दिस मैन एंड once he brings it all out, that's when the true competition begins. और एक बार इन दोनों की टीम्स के हेड टू हेड की तरफ भी नजर डाले then 50-50 divided Phoenix. आप देखिए टर्टल लॉर्ड के मामले में इट्स गॉड लाइक, ओवरऑल गोल्ड के मामले में इट्स गॉड लाइक, बट जहां पे बात आती है ओवरऑल किल्स की, टीम फाइट पार्टिसिपेशन की एंड साथ ही साथ टर्रेट डिस्ट्रक्शन की, वहां पे आइकू सोल जीत के आ जाती है आगे. वो टीम फाइट पार्टिसिपेशन अगर आप बात करें 61.14, इट इज अ वेरी सॉलिड नंबर बाय द वे. वंस अगेन टोटल किल्स वो भी थोड़ा सा जरूर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन आई थिंक सो ये दोनों की दोनों टीमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव फोकस जरूर खेल सकते हैं. बिकॉज आज का दिन इट्स जस्ट गोना बी वेरी ऑब्जेक्टिव फोकस, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. बिकॉज वंस अगेन दोनों की दोनों टीमें दे आर सो फाइन, दे आर एक्चुअली द क्रीम of MLM is out here, and once again only one team will move forward to phase 2. अब हम सबको पता है कि क्या कर सकती है टीम गॉडलाइक आज दिन के अंदर. But before we talk about the actual draft phase, let's take a look at the top 5 most big heroes on hand, and that's obviously going to be Suyu, Harit, Khalid, Phoveus, and Leomord. Man, Phoveus 100% win rate. If you got Phoveus in the bag, you are getting the W. 6 गेम्स अभी तक खेले गए हैं और 6 के 6 जीते हैं. सो यस, इट काइंड ऑफ बिकम्स रियली क्लियर कि टीम्स की प्रायोरिटी क्या हो चुकी है, राइट? बिकॉज इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नॉर्मली यूज्ड टू सी. सुयू मेन प्रायोरिटी, हैरिथ मेन प्रायोरिटी, खलीद मेन प्रायोरिटी. क्लियर कट दिखाता है कि टीम्स आर फुली फोकसिंग ऑन दैट अर्ली गेम, राइट? आपको पूरा रिवर कंट्रोल चाहिए, आपको वो किल प्रेशर चाहिए, एंड देन उसके साथ यू जस्ट सिंपली वांट टू स्नोबॉल इन द मिड गेम. जंगलर्स के ऊपर at the end of the day you still have one idea कि मुझे early level 4 चाहिए, उसके पीछे एक major advantage create करनी है और एक पूरा snowball effect fill in करना है, right? That is what the Suyu brings on the table. Level 3 से activated हो जाता है ये hero, and the execution line of the neutral objectives, picture perfect. और जहाँ पे execution line की बात है, शिवांश और राधा Phoenix, मुझे पता है you are also looking at the very same Leomord, the momentum. Yeah, you get it, right? Yeah, I love that particular hero because जिस तरीके से टीम्स खिलाना पसंद करती है, it's amazing. But एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, और जब हमने लीग स्टेज का देखा था, it was Claude, it was Zushin who was in the top pick. Harith has taken over that particular stat. That is crazy. But once again, एक और head to head हमारे पास stat है. Let's take a look on that because Bid is going to be the player you should obviously look out for against Bob. अब अगर सबसे मेन बात आ जाती है, राइट, देयर आर अ फ्यू स्टार्स दैट आर बीइंग टिल्टेड टुवर्ड्स बॉब, बट ओवरऑल अगर देखिए जो पूरा गेम के अंदर इंपैक्ट आता है वो मेरे हिसाब से बिड हमेशा लेकर आता है. बिकॉज यू लुक एट द गोल्ड, यस ही इज अहेड इन टर्म्स ऑफ डैमेज, ही इज माइल्स अहेड. तो यहाँ पे एक पूरा डिफरेंस आ जाता है. Contribution 77%, 72, not major, 5% का डिफरेंस है. But I kind of like your damage के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होल्ड है. Zushin पिक रहता जरूर है, and I kind of like that a lot. But to be honest, I think so. Zushin से टीम्स को ना बहुत अच्छा डील करना आता है. SATL, if you give them that Marcel, it's gonna be a problem. Like you have to deal with that, and we all know it. In fact, I think so. The audience also knows that. Like अभी ऐसा नहीं है भाई, मार्शल का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, but I think so. I have seen SATL utilizing that hero first at the league stage itself. But आज की अगर मैं बात करूं, आज मैंने ना अपना किस्मत चेंज करी है. मैं आपको मैप बता दूं आज सबसे पहले क्या रहने वाला है. मैं इंस्टेंट आपको बता देता हूं ताकि आप परेशान ना हो. It's gonna be expanding rivers. You're welcome, sir. You're welcome. Flying cloud या broken walls? आज दो कैसे बोल रहे हो? एक चुनो भाई, ये कैसी बात हुई? Flying clouds. आ ही नहीं सकता flying cloud. Scared, I think so. आपको ना मुझसे थोड़ी बहुत चीजें सीखनी चाहिए, especially in. मैंने बोला था flying clouds या broken walls, but चलो ठीक है. But you're lost. That is the important factor. But hey, it's fine. I was also close.
Yeah, मैं भी close ही हूँ, 2 मैप दूर था मैं. But okay, I have got to say one thing. मैंने personally थोड़ी बहुत रात में पढ़ाई करी है, and I really want to see how Radium will perform. Because I am looking forward that Radium will be able to just get that limelight on himself and be able to just create a lot of distance against Van because वो उनके counterpart है. So it's gonna be my eyes on Radium, especially from my city. चलो अब इसमें सबसे मेजर फैक्टर मैं आपको ये बताता हूँ. लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स भी भिड़ी थी, राइट, इट वेंट डाउन टू विन फॉर SATUL, राइट. अंडरस्टैंडेबल. रॉन ने आउट ऑफ हिज माइंड परफॉर्म किया था उस पानी के ऊपर, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम दिखाई थी पूरे लीग स्टेज में, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग इट एज अ रिस्पेक्ट बैन फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड लाइक. ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, गोल्ड लेन का वो जो मैचअप किया था, if it was not Fate winning it, I'd still say it was 50-50. क्योंकि जो मेजर इम्पैक्ट लेकर आ रहे थे Fate, the way how he was trying to play around, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है for IQ SATUL to deal with, right? I know that Radium is a pretty solid player, पर अभी तक जिस हिसाब से Fate खेलते हुए दिखे, he's been looking in a hot shot form. तो उस खिलाड़ी को रोकना when he hops in, especially in those fights in the mid game, वहाँ पे आ जाती है सबसे मेजर प्रॉब्लम. See, ये जो आपने particular line बोली, I think so yeah, Fate is looking in a very good form though. Would love to see will be able to maintain that. Last time जो हमने bans देखे थे, obviously Harley was the ban from the side of the team. Got like in that situation. Phobius भी उन्होंने हटाया जरूर था. Zushin and Freya obviously out of the pack. Fanny, you just explained it very perfectly because it was an annoying factor from the side of team. SATUL was a very good pick. अब next ban आपका क्या रहने वाला है? Zushin आपके हाथ से जा चुका है. Marcel should be the one. ऐसा मैं assume कर रहा हूँ because you want them to be a bit comfortable. Phobius तो no matter what, मतलब दोनों की दोनों टीम चाहेगी कि भाई किसी तरीके से हमारे पास आ जाए. And that's gonna be a gacha. This is I like it. क्योंकि last time भी SATUL ने काजा और यूरेनस का वो जो सोयू के साथ बिल्ड खेला था, oh it was too good man, and we saw how Bob perform on that Lilia. सबसे major factor है कि कितना figure out किया है आर्ट ने Apex को. The diary is open, people. The diary is open. So you know that he's got those ideas. Let him go. Let him go. Zushin Freya ban करने के बाद now do you want to ban out a Marcel? क्योंकि आर्ट ने भी Marcel खेल के दिखाया था and it has been impeccable. Or do you want to ban out the Harley? Or maybe leave both of them open. Let them take one and you pick two. I think so. Marcel should be the next ban, man. Because once again, it is a very big denying factor. Good yes, call. Marcel it is. और है भाई Marcel का वो aura है. He is actually that aura farming hero, man. Because the golden R is such an ultimate. It is so good, bhai. It is so good. But Romcom once again, आपके पास मौका है. Would love to see वही फिर से Claude और Suyu अगर आप छोड़ते हो, they opt for Claude. Now this is getting down to the wire because Harley, it is open. Art has figured Apex out. उनके ऊपर smile देखिए आप जो आ रखी है. He knows what he wants to do. What? And he kind of predicted कि वो Marcel वाला ban आएगा, and he's gonna prioritize the Claude, and that will send Apex into that bamboozlement. But you still got Harith. I think so. You still gotta figure it out. It's not gonna be a big. Phobius Harley. Phobius Harley. Harley तो yes, because it's completely left out. So why not? और तीनों के तीनों respect ban आए हैं भाई Godlike से, and this is a very good thing. क्योंकि Godlike को पता है जो चीज़ league stage में हुई है, you don't want that to happen, especially on LAN. And it's gonna be a clear. Hold on. Alice, wait a minute. My guy is cooking too much, by the way. ठीक है. Anti Alice was something that he was really comfortable with, and is basically decided to entirely rely on that. Kalia probably to deny a Suyu as well as a Harley. क्योंकि दोनों के साथ you want to go up close and personal. You want to